हम सबको मालूम है कि देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेल्स, prokaryotic cells and eukaryotic cell. Then the eukaryotic cells are further divided into two types as plant cells, animal cells mostly, and then there will be fungus and protist. Fine. So prokaryotes are the primitive type of cells with a very simple type of nuclear arrangement, and eukaryotic cells are the complex cells with complex nuclear material and organelles. So let us find out the other details of the prokaryotes and eukaryotic cells. So here we have a prokaryotic cells and eukaryotic cells. The standard example for prokaryotic cells are the bacteria, and example for eukaryotes are the plants, animals, fungus and microbes, and protist. Fine. So the first is about nuclear body. The first property is about nuclear body, that is in case of prokaryotes the nucleus is simple and show absence of nuclear membrane and nucleolus. Correct? Absence of nuclear membrane and nucleolus, whereas in eukaryotes it is a presence of true nucleus, presence of nuclear membrane as well as nucleolus. Okay, so this is going to be the first important difference between the two type of cells. Nuclear body, so this nucleus is called as nucleoid, and this type of nucleus is actually a true nucleus, isn't it? Clear hai pehla point sabko? Number 2, genetic material. Let us discuss about this. Prokaryotes bacteria show double-stranded circular DNA without histone protein. So double-stranded single circular DNA without histone, and eukaryotes show linear DNA multiple chromosome complex with histone protein. ठीक है, तो यहाँ पे जो DNA होता है उसका सिर्फ एक क्रोमोसोम बनता है और वो सर्कुलर DNA होता है, मतलब पूरा लूप होता है, एंड टू एंड कनेक्ट होता है. एंड इन दिस केस देयर विल बी लीनियर मतलब इट हैज टू एंड, इसके जैसा दो एंड उसके हो सकते हैं, उसे कहेंगे हम लीनियर DNA. वो प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में. ठीक है, क्लियर है. तीसरा डिफरेंस है रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. इन प्रोकैरियोट्स सेल वॉल जनरली प्रेजेंट एंड इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल. इसका जो कंपोजिशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, whereas in eukaryotes cell wall is present in some types, absent in some types. For example, in animal there is absence of cell wall. So some eukaryotes like plants, fungi show presence of cell wall with simple chemical composition. ठीक है, जैसे कि can you identify the chemical composition in case of cell wall of prokaryotes? It is about पेप्टाइडोग्लाइकेंस. ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन यहाँ पे होता है विच इज केमिकल कॉम्प्लेक्स वन, एंड यहाँ पे अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो यू विल गेट सेल्यूलोज एज अ कंपोजिशन ऑफ अ सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट्स. करेक्ट. चलो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट डबल वॉल ऑर्गेनेल्स, वेदर दे आर प्रेजेंट और एब्सेंट. सो प्रोकैरियोट्स शो एब्सेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड यूकैरियोट्स शो प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ER, गोल्जी. बराबर है. दीज आर again main difference between these two. Next important one is the presence of ribosomes. Now ribosomes are going to be the very important structures and supposed to present in every type of cell, isn't it? क्यों? क्योंकि ribosomes हम जानते हैं they are known as protein factories. इनका काम है प्रोटीन्स बनाना, और अगर प्रोटीन नहीं बनेगा सेल्स में तो सेल्स में कुछ भी नहीं काम होगा. करेक्ट. सेल की ग्रोथ नहीं होगी, ऑर्गेनल्स नहीं बनेंगे, सेल डिवीजन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो इनका होना तो जरूरी है. अब यहां पे हम देखते हैं द राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स आर नोन एज 70S टाइप. 70S टाइप विच हैज टू सब यूनिट्स 50S एंड 30S. ठीक है, यू गोइंग टू कंसीडर दीज एज अ नाउन. ठीक है, तो आपको यहाँ पे नाउन कंसीडर करना है, नॉट इसका एडिशन नहीं करना है. एडिशन करोगे तो आप 80 आ जाएगा, आप बोलोगे सर आपका मैथमेटिक्स तो गलत है. सो ऐसा नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ नाउन. 70S एस फॉर, अगर आपको एस का मतलब पता है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए एस फॉर व्हाट. 70S type in prokaryotes and 80S type in eukaryotes, whereas 60S and 40S are the two type of subunits for the same. Fine. So 70S, 80S. Now these 80S and 70S are based upon the concentration gradient, कि वो पार्टिकल जब concentration उसका जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है उसके हिसाब से वो पार्टिकल कितना जल्दी वहाँ पे सेटल होता है उसके हिसाब से. तो यहाँ पे 80S है with a more molecular weight, 70S with a little molecular weight. ठीक है. Next about respiratory enzymes or respiratory system. ठीक है. In prokaryotes आपको मालूम है, यूकैरियोट्स का तो पहले में चलो बात करते हैं. रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन यूकैरियोट्स आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियन.
बराबर है, राइट. माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ अ सेल, इज द साइट वेयर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, सेलुलर इंटरनल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर रेस्पिरेशन, वेयर तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. F1 जो चेन होता है पूरा F1 पार्टिकल्स का, उसके ऊपर ये सब होता है. ठीक है. अब जैसे कि हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स में डबल वॉल स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, सो माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा. तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, फिर रेस्पिरेशन कैसे होता है? उस केस में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट एंड दे आर लोकेटेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, उसी के ऊपर ये रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से यहाँ पर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है. ठीक है, आया समझ में? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट फोटोसिंथेसिस. नाउ there are some bacteria like cyanobacteria or blue green algae also shows presence of photosynthesis, whereas in case of eukaryotes plants are able to do photosynthesis. So यहाँ पे है photosynthesis में chlorophyll is present in internal membranes. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज बीइंग एब्सेंट ओवर हियर, ओनली क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो होता है प्रेजेंट, उसके बगैर तो लाइट को ट्रैप नहीं किया जाएगा. सो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यहां भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद सम अदर पिगमेंट्स. So chlorophyll is present inside the chloroplast. Okay, this is going to be important difference between prokaryotes and eukaryotes. ठीक है. अगला पॉइंट है vacuoles and presence of lysosomes. Vacuoles and lysosomes are absent in prokaryotes, whereas they both are present in यूकैरियोट्स. ठीक है. अब यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं वैक्यूल्स के बारे में यूकैरियोट्स में, जैसे प्लांट सेल शो लार्ज वैक्यूल्स एंड एनिमल सेल शो स्मॉल वैक्यूल्स और इवन दे आर एब्सेंट. बराबर. चलो अगला पॉइंट इज माइटोसिस is a type of cell division, helps in distribution of chromosomes apart. So mitosis is absent, no mitosis in prokaryotes, whereas mitosis takes place in eukaryotes, plants, animal cell mitosis is present. Last is cytoplasmic movement. Cytoplasmic movement is absent or present in prokaryotes, whereas it is completely or always present in eukaryotes. अभी क्या होता है मूवमेंट? साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट को क्या कहते हैं? दूसरा वर्ड है क्या कुछ? तो इसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर साइक्लोसिस. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? द साइटोप्लाज्मिक कंटेन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस. इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस के आसपास वो सब घूमते रहता है, दैट इज साइक्लोसिस. और ये कॉमन होता है यूकैरियोट्स में और ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, मोस्टली सम टाइम प्रेजेंट होता है. ओके, सो दीज आर द वेरियस डिफरेंसेस प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल. अगर आपको ये कुछ एडिशनल इसमें इंफॉर्मेशन मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. तो बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग.